Field effect transistors. Field effect transistors is a type of transistors. Field effect transistors are also called as unipolar transistors because they use only one type of pole, that is N-type or P-type. There are three terminals in a field effective transistor, such as gate, terminal, and drain. Field effective transistors control the flow of current. Those field effective transistors which are used in a biosensors are known as Bio-FET, or the biosensors in which a field effective transistor is used are known as Bio-FET. Bio-FET combines the field effect transistors and a biorecognition element. The biorecognition element could be a protein or enzyme or DNA molecule. The Bio-FET provide us a sensing platform which is real-time, label-free, and most effective. The structure of a Bio-FET. As we know, the Bio-FET consists of two main components. पहला component biological recognition element है और दूसरा component field effective transistor है. इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि एक एंटीबॉडी को बतौर बायो रिकग्निशन एलिमेंट इस्तेमाल किया गया है. ये एंटीबॉडी एक मेम्ब्रेन जो कि जनरली इट इज मेड अप ऑफ ट्राई इथॉक्सीसिलेन पर इमोबिलाइज किया गया है. इस मेम्ब्रेन को इस्तेमाल करने की वजह इसकी केमिकली और इलेक्ट्रिकली इंसुलेशन है और आमतौर पे जो ही एक बायो रिकग्निशन प्रोसेस होता है ये मेम्ब्रेन फौरी तौर पे कंडक्शन का अमल शुरू कर देती है. क्लासिफिकेशन ऑफ बायोफेट. बायोफेट की क्लासिफिकेशन उनके बायो रिकग्निशन एलिमेंट्स पर डिपेंड करती है. फॉर एग्जांपल एन फैट इज a biofet in which an enzyme is used as a biorecognition element. Similarly, an immunofet is a biofet in which an antibody is used as a biosensor, as a biorecognition element. DNA fet is a biofet in which DNA is used as a biorecognition element. Similarly, CP fet is a cell potential fet in which the cell is used with the field effective transistor. Similarly, beetles and artificial biofets are also used. Artificial based biofet means those biofets in which the artificially produced molecules are used. Now, working of the biofet. In a biofet process, the process is same. When an analyte molecule binds with its target molecule, a biorecognition process occurs. इस बायोरिकग्निशन प्रोसेस के होने से चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन का अमल शुरू हो जाता है. जैसा कि हम जानते हैं कि ये बायोरिकग्निशन का प्रोसेस एक सेंसिटाइज्ड मेम्ब्रेन जिस पर हमने इलेक्ट्रोड अपना एंजाइम या बायोरिकग्निशन एलिमेंट इमोबिलाइज किया होता है उस पर होता है. इसके नतीजे में फौरी तौर पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रोड्स डिटेक्ट कर लेते हैं और इस तरह सिग्नल्स जनरेट हो जाते हैं. इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि हमने एक एंटीबॉडी को एज ए बतौर एंजाइम बायोलॉजिकल रिकग्निशन एलिमेंट के तौर पर इस्तेमाल किया है. जो ही एक एनालाइट या टारगेट मॉलिक्यूल इसके साथ बाइंड करता है इसकी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में कमी वाक़या हो जाती है और नीचे जो है सिलिकॉन लेयर वो फौरी तौर पे इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को गेट यानी कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स तक पहुंचाती है और जिसको आप देख सकते हैं ग्राफ में कि हम फौरी तौर पर डिटेक्ट कर सकते हैं. फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स की दूसरी टाइप डीएनए फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स है. डीएनए फेट वो ट्रांजिस्टर्स हैं जिनमें हम सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल्स को इस्तेमाल करते हैं. जैसा कि हम जानते हैं कि डीएनए मॉलिक्यूल पर फॉस्फेट ग्रुप की मौजूदगी की वजह से पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है और जो ही एक टारगेट मॉलिक्यूल के साथ उसका एनालाइट मॉलिक्यूल बाइंड करता है उसके नतीजे में चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन होती है. यानी कि ये हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और उसके टारगेट मॉलिक्यूल के दरमियान होता है इट लीड्स टू अ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज. फौरी तौर पे इस हाइब्रिडाइजेशन के नतीजे में जो चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन होती है इससे सिग्नल जनरेट होते हैं और इन डीएनए फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स में हम पॉजिटिवली चार्ज या होल को इस्तेमाल करते हैं. फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर की एक और टाइप सेल ट्रांजिस्टर हाइब्रिड है. जैसा कि हम जानते हैं कि बायोलॉजिकल सेल्स दे आर एक्सीलेंट रिसीवर, प्रोसेसर एंड ट्रांसमीटर ऑफ एप्लीकेशन.
they could be used as a good tool in the field effect transistors to determine those phenomena which are still not uncovered. جیسا آپ اس سلائیڈ میں دیکھ سکتے ہیں، اس سلائیڈ میں ہول سیل کو استعمال کیا گیا ہے تاکہ، اور اس سیل میں ایکسپیریمنٹلی کچھ کیمیکلز انڈیوس کیے گئے ہیں اس ریئیکشن میں، اور ان کیمیکلز کی انڈکشن کو مانیٹر کرنے کے لیے ہم نے بایوفیٹ کا استعمال کیا ہے. یہ بایوفیٹ میمبرین میں ہونے والی چینجز کو ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے، اور اس طرح ہم سیل ٹرانزسٹر ہائبرڈ کو بہت سارے فزیولوجیکل فینومینا کو ڈٹرمن کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. بایوفیٹ کی ایک دلچسپ مثال بایوفیٹ میں بیٹل اینٹینا کا استعمال ہے. یہ استعمال کراپ ڈیمیج کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے کیا گیا ہے. انسیکٹس، ہمیں یہ معلوم ہے کہ انسیکٹس 2 اینٹینا رکھتے ہیں. یہ اینٹینا ہائیلی موبائل ہوتے ہیں اور مختلف اسمیلس کو سینس کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ان اینٹینا کو کراپ ڈیمیج ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے استعمال کیا گیا، اور جو ہی کوئی کسی پلانٹ کو میکینیکل ڈیمیج ہوتا ہے اس کے نتیجے میں ایک خاص آڈر ریلیز ہوتی ہے. اس آڈر کو بیٹل اینٹینا کے ذریعے ڈیٹیکٹ کیا گیا. جتنی زیادہ آڈر کی اماؤنٹ ہوگی اتنی ہی زیادہ بیٹل کی طرف سے اینٹینا کی موومنٹ ہوگی. اس کے نتیجے میں ہم بیٹل سے ڈیمیجڈ پلانٹس آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں، اور ڈیمیجڈ پلانٹ کو آئیڈینٹیفائی کر کے صرف انہی پلانٹس کو اسپرے کیا جاتا ہے. اس میں ہمارے پاس 2 اپروچز ہیں، یا تو ہم مکمل بیٹل انسیکٹ کو یوز کر لیں یا اس کے اینٹینا کو یوز کر لیں. یہ دونوں اپروچز ہی ایکولی بینیفیشل ہیں اور ہمیں ایگریکلچر میں بہت ہیلپ فل ثابت ہو رہی ہیں. سو ان سمری وی کین سے فیلڈ افیکٹ ٹرانزسٹر از اے ٹائپ آف ٹرانزسٹر. دوز biosensor in which field effect transistors are used are known as BioFET. There are different types of BioFETs which are used in different fields of life, and they are important part of a biosensor.